Properties of MLE. There are many properties of MLE, just we focus only the 4 important properties of the MLE. The first one, that is the consistency. Consistency, as you know that we have already discussed in our convergence lectures, that is for any value of theta naught, which is representing the true value of the MLE theta, converges to theta naught in probability as n tends to infinity. So symbolically we can write it as limit n tends to infinity, the probability of the theta hat minus the true value less than, that is psi, which is a very small number, is equal to 1 for all psi greater than is equal to 0. Basically this property actually explains that the MLE will give you the true value of the parameter with the maximum probability. कि जो हम consistency से जो MLE का parameter, consistency basically हमें ये information provide कर रही है कि जो हमारा MLE का estimator है, ये हमें जो value provide कर रहा है वो high probability से उसको हम attain कर रहे हैं. Second property जो है, that is asymptotically normal. That is very famous property by using the center limit theorem. The MLE asymptotically follows the normal distribution, that is this one, under root n theta hat minus the true value, basically converges in distribution, that is normally with mean 0 and the variance of the sigma square of MLE. तो ये basically center limit theorem को use करके इस property को attain किया गया है. For some theta square MLE, this can be alternatively stated as this one, and it follows that the normal distribution with mean 0, and basically जो sigma square MLE है ये basically inverse of Fisher information है basically. So we can write it as that is 1 over I of theta naught. इसके बाद एक और important property है इसकी, that is the efficiency. So MLE has asymptotically variance equal to the Kramer-Rao bond. Later on हम Kramer-Rao inequality को भी study करेंगे. Basically यहाँ सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि it expresses the lower bound of the variance estimator, कि इससे नीचे हमें variance की value नहीं मिल सकती. ये हमें minimum value variance की provide करता है, इसके नीचे possible नहीं है और इसकी value ज़्यादा small होने की. The MLE has the optimal lowest asymptotic variance. तो इसका मतलब यही है कि Kramer-Rao से जो हमें Kramer-Rao बॉन्ड से जो हमें वेरिएंस मिलता है, इससे नीचे वेरिएंस की और कोई वैल्यू नहीं जा सकती. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दैट इज द इनवेरिएंस. दैट इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, दैट इफ थीटा हैट इज द MLE ऑफ थीटा, देन द जी ऑफ थीटा हैट इज द MLE ऑफ जी थीटा. बेसिकली अगर थीटा हैट का MLE थीटा है तो जी थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट द सम फंक्शन ऑफ थीटा. कोई भी फंक्शन हो सकता है ये. तो जो g ऑफ थीटा हैट है, दैट इज आल्सो द MLE ऑफ थीटा. सो दीज आर सम 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द MLE, जो कि आगे मुख्तलिफ जगहों पे इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं.